अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप लोगों का रमज़ान सही जा रहा हो, सबको रमज़ान मुबारक हो। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगेन आप कॉल ना करें, आप चैट पे लिख लें। आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको जवाब दे दूँ। उसके अलावा आई होप यू एंजॉइंग द वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ गेट इन टच विद मी, या मुझे आप पर्सनली ईमेल कर दो एंड आई डू माई बेस्ट कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँ। आपके सवाल लिखने आप यहाँ लिख सकते हैं चैट पे। आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दूँ। एक चीज़ जो मैंने देखी है कि एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है होम ऑफिस की तरफ से, इज़ द रिपोर्टिंग एक्टिविटी। बिकॉज जो लोग पहले टेक्स्ट के थ्रू या कॉल के ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे, अब होम ऑफिस की पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं और नज़र ही आ रहा है कि होम ऑफिस उनको बुला रहे हैं। तो उसमें घबराने की बात नहीं, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं तारिक भाई हम लोग तो पिछले इतने महीनों से टेलीफोन के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब होम ऑफिस ने हमें बुलाना शुरू कर दिया, तो क्या इसमें कोई घबराने की बात है? देखिए, वो सारा डिपेंड करता है कि आपका कोई पेंडिंग केस है या नहीं। बिकॉज जारी बात है, होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि अगर आपका कोई पेंडिंग केस है होम ऑफिस के साथ, तो फिर देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपको डिटेन नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप होम ऑफिस के साथ कंप्लाइंट हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है मेरे से, तो आप अभी यहाँ नीचे चैट पे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। रिपोर्टिंग के ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था आपको कि बस मेक श्योर कि आपका कोई ना कोई केस पेंडिंग है होम ऑफिस के साथ, ताकि आप कभी रिपोर्ट करने जाते हैं तो कहीं आपको अगर डर है कि जी होम ऑफिस मुझे डिटेन कर लेगा, तो एटलीस्ट अगर आपका केस पेंडिंग है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि होम ऑफिस आपको डिटेन करे। बट ऑफ कोर्स होम ऑफिस डिटेन तो कर सकता है, वो उनका पूरा राइट है, लेकिन फिर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन डाल सकते हैं आपकी बेल के लिए। देखिए, जहाँ बेल की बात आती है, क्योंकि जो अगला सवाल ऑब्वियसली मुझसे पूछा जाता है कि तारिक भाई बेल के लिए हमें कितनी मनी दिखानी चाहिए। तो यकीन करें, बेल के लिए मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो श्योरिटीज़ आप दिखा रहे हैं। I got indefinite for 12 months. I was arrested in 2016 working without permission. Can I apply now for passport? मेरे ख्याल से आप बात करें नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की। तो देखिए, नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन में होम ऑफिस ने ये बोला है, और मैं उस पर एक अलग वीडियो भी आपके लिए बना लूँगा बाद में, कि अगर आपका इशू ओवरस्टे है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई और कंप्लायंस का इशू है तो वो फिर हमारी डिस्क्रेशन पे है कि हम आपको वीज़ा नेशनैलिटी दें या ना दें। बिकॉज नेशनैलिटी के कवानीन में काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। वो जो पहले होता था ना कि जी अगर नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है आप 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते, वो सारा सिस्टम अब चेंज हो गया है। अब प्रिटी मच सारी जो डिस्क्रेशन है वो होम ऑफिस के केस वर्कर के हाथ में आ गई है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा इशू है अपने कॉन्डक्ट का, तो उसके लिए बेहतर ये कि यू एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस कि क्यों आपसे ये चीज़ हुई, एंड अपोलोजाइज टू द होम ऑफिस। और फिर उम्मीद यही है कि होम ऑफिस would approve your application. लेकिन मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि when I get time, मैं nationality guidance के ऊपर, financial soundness और इन सारी चीज़ों के ऊपर I'll make another video for you रमज़ान के दौरान, and hopefully you like that video. I'll do that for you. So in short, बिल्कुल आप अप्लाई करो होम ऑफिस को, but then you have to be अपना कवरिंग लेटर में you have to explain the circumstances जिसकी वजह से आपने ब्रीच की इमिग्रेशन के कवानीन की, be apologetic, and then also confirm के आपने उसके बाद अपना रिकॉर्ड क्लीन रखा है। किसी ने पूछा हाउ लॉन्ग डज इट, स्ट्राइकिंग फॉर एनलाइटमेंट लिखा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेकंड असाइलम इंटरव्यू। देखें, वो सब्सटेंसिव इंटरव्यू होता है। आजकल होम ऑफिस ने देखा है कि असाइलम मॉडल को बेहतर कर लिया है, तो इट इज़ कमिंग अराउंड मच क्विकर, लेकिन कभी कभी 1 साल लग जाता है। सो प्लीज़ अगर आप 1 साल का पीरियड दिमाग में रखें दैन दैट इज़ गुड फॉर यू। लेकिन आजकल ये बात बिल्कुल है कि होम ऑफिस काफ़ी जल्दी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं अपने। आलम ज़ेब, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि मैं आपका पढ़ लूँ, क्योंकि ये बड़ा तेज़ गुजरता है द बार, तो आई एम डूइंग माई बेस्ट। अगर आप प्लीज़ माइंड ना करें, अगर आप इंग्लिश में लिखें अपना सवाल, आई विल बी ग्रेटफुल, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दे दूँ। उसके अलावा जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला है, आई होप यू फॉलोइंग मी, कि मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं रैंडमली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया करूं। इवन अफ्तारी के बाद भी आई डू माई बेस्ट कि मैं अगर आपके लिए थोड़ा लेट नाइट वीडियोस का
कर लूँ. आलम ज़ेब आपने लिखा है मैंने इंग्लिश में, प्लीज़ राइट अगेन, आई डू माई बेस्ट कि मैं आपका मैसेज रीड कर लूँ. एंड थैंक यू एवरीवन जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं. आई नो यू माइट बी बिजी टुडे अपने अपने कामों में, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग हमें ज्वाइन करें. एंड देन ऑफ कोर्स मैं रैंडमली पूरी कोशिश किया करूँगा कि जब भी मैं आप लोगों के लिए मुझे टाइम मिले मैं वीडियोस बना लूँ, चाहे इट्स ड्यूरिंग द डे या रात के वक्त. PSW time decreases, one goes for student extension visa. देखिए वकार, I don't know which mean, I know PSW का मतलब है you're talking about graduate visa. So I don't know what you mean by कि graduate visa का time decrease हो जाता है, कि maybe you're talking about कि आपको पता है कि graduate visa आपको 2 साल का मिलता है. एंड देन ग्रेजुएट वीज़े का आगे प्रोग्रेशन ये है कि आई होप उस 2 साल के अंदर आपको कोई स्किल वर्कर वीज़ा दे दे, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक एज अ स्टूडेंट. तो जारी बात है अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा भी 1.5 साल सिर्फ हुआ एंड यू गो बैक एज अ स्टूडेंट, यू लूज द 6 months बिकॉज आपने खुद वापस स्टूडेंट में स्विच कर लिया. देखिए अगर किसी ने लिखा है कि जी 2-3 months होते हैं, इज इट ट्रू? देखिए ट्रू और रॉन्ग की बात नहीं है. होम ऑफिस है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन अभी किसी ने नीचे लिखा था कि तारिक भाई द लॉयर वो सही कि 2-3 महीने लगते हैं सेकंड इंटरव्यू में. इज दैट ट्रू? देखें विद होम ऑफिस आप कुछ भी नहीं कह सकते. तभी मैं बोलता हूँ कि होम ऑफिस के बाद यू गिव एक जनरल आप व्यू देते हो क्योंकि जी साल के अंदर आ जाएगा. कुछ लोगों का आई नो इंटरव्यू विद इन 2-3 months आ जाते हैं. सम पीपल आई नो 8-9 महीने उनकी इंटरव्यूज नहीं आते. किसी ने बोला सर कैन यू टेल अस अबाउट प्री सेटल्ड वीज़ा. देखें प्री सेटल्ड वीज़े में तो कोई सच उस तरह की मूवमेंट अभी नहीं हुई है. लोगों के पास प्री सेटल वीज़ा हैं. मैंने एक उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि होम ऑफिस ने ये बोला है अपनी नई पॉलिसी के अंदर कि जब आपके 5 years पूरे हो जाएंगे हम आपको खुद ईमेल कर देंगे कि हम आपको इंडेफिनेट देने लगे. बट एट द सेम टाइम अगर आपको होम ऑफिस की ईमेल नहीं आती एंड यू आर समबडी जिसके पास प्री सेटल स्टेटस है और उनके 5 years पूरे हो गए, यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द होम ऑफिस फॉर EU सेटलमेंट स्कीम के तहत कि यू गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन. जो एक चीज़ मुझे अक्सर बोली जाती है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाएं इन दिस एप्लीकेशन जब सेटलमेंट करते हैं, तो मैं लोगों से यही बोलता हूं कि प्लीज़ डू नॉट सबमिट एनी एविडेंस जब तक होम ऑफिस आपसे स्पेसिफिकली पूछे ना. I've got an email for successful आपने कहा स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन. तो अगर वो एंट्री क्लियरेंस है तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट क्योंकि होम ऑफिस फिर इंडिकेट करता है अपनी वो जो उनके आप समझ लें एजेंट्स हैं और वो फिर आपको कांटेक्ट करते हैं. तो कभी कभी उस चीज़ में 2 to 3 months लग जाते हैं. जस्ट हैव टू बी patient about that. Sir ji, can you tell me about transitional marriage abandoned? How can I apply and how? So you have to be a little bit more precise about that because family law का element I do not do. हमारे ऑफिस में कदीर साहब हैं, Mr. Kadir. If you ring my office number, कदीर भाई से बात करें. He is the one who deals with फैमिली लॉ इश्यूज़. किसी ने अभी पूछा कि तारिक भाई क्या स्किल वर्कर वीज़ा एंड जो ग्रेजुएट वीज़ा है वो लॉन्ग रेजिडेंस में काउंट होता है? तो बिल्कुल काउंट होता है. लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन में जो कवानीन में चेंजेस आई हैं वो क्वालिफाइंग पीरियड की आई हैं और एक ये कि जी लास्ट वीज़ा आपका अप्रैल 2024 से पहले लगा है या बाद में लगा है. उन चेंजेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है. तो प्लीज़ इफ़ यू आर समवन जो लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन अभी डालने लगे हैं, प्लीज़ हैव अ लुक एट दैट वीडियो. उसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो गेट इन टच विद मी ताकि मैं आपकी एक्सेसिबिलिटी देख सकूं. देखें बात ये होती है कि मार्क ने एक रिक्वेस्ट की. आई डू नॉट नो उसके मीनिंग क्या है क्योंकि जो माइग्रेशन है ज़्यादातर जो हम डील करते हैं वो कॉर्पोरेट और उस टाइप की माइग्रेशन होती है. तो वो तो इफ़ यू मीट द इमिग्रेशन कवानीन आपकी माइग्रेशन इधर हो सकती है. और इमिग्रेशन के जो कवानीन हैं वो मार्क पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं. हाँ, कल अगर पार्लियामेंट अपने कवानीन चेंज कर ले, दे चेंज द रूल्स द पार्लियामेंट, देन ऑब्वियसली द माइग्रेशन विल गेट अफेक्टेड अकॉर्डिंगली. सो इट इज़ द पार्लियामेंट दैट मेक्स द रूल. Our work simply is to interpret those rules and follow those rules within the lawful guidelines. Again, मैंने request की है decent कि if you have a family law issue, then please contact Mr. Kadir in my office. I will be grateful.
I know, Mark, you keep writing this, but I have a very different view on everything when it comes to immigration. As long as everybody is following the law, as long as, meri nazar mein, in my opinion, you're following the law and you're making an application within the law, then you have every right to settle in this country, because that's the rules the parliament has made. So as long as you're making an application within the law, it's fine. Somebody said, nowadays, do you doing TikTok at 6 o'clock? During Ramadan, I will not be doing the fixed shows. So during Ramadan, at least my shows would be random. So वो जो मैं पहले करता था कि I used to do a show at a fixed time, मैं वो नहीं अब किया करूँगा. Randomly मैं online आया करूँगा और 20-30 मिनट का आपके लिए show कर दूँगा. But what I will do is कि I will try to keep it very frequent, ताकि you have the information from me on a regular basis. उसके अलावा I produce those videos. I hope you find those videos helpful. और अगर आपको हमारी videos अच्छी लगती हैं तो please उनको अपने channels पे distribute करें, and then of course subscribe to the channel, and then you will get more information whenever I'm coming live. Somebody said कि हमारा 10 years का private visa ख़त्म हो रहा है December. We were 10-year private life route apply in December. When will come? Maybe you want कि आपका visa कितने अरसे में आएगा. I've done a video on waiting times, but it is about 1 year right now. So about 8 months, 10 months to 1 year is the waiting period for any FLRFP application. अगर उससे पहले आ जाती है तो excellent, good luck to you, but keep in mind कि 10 months to 12 months आजकल इन applications में लग रहे हैं. किसी ने कहा तारिक भाई applied for graduate visa 2 months ago, no response, maximum time. आजकल graduate visa के तो इतना time नहीं लगना चाहिए. They normally do come within 6 weeks time. लेकिन अगर आपका 8 weeks हो गए हैं तो be very patient. Any day now आपका graduate visa का hopefully आपको decision मिल जाएगा. Heather ने लिखा है house cases nowadays. I don't know Heather किस meaning में आप बात कर रहे हो about the cases. So my apologies. I do not know कि आपने किस reference से बात की है. कि माजिद अयूब लिखते हैं sir administrative review how long time. हाँ, administrative review में आजकल time लग रहा है. In fact जो entry clearance administrative review है they can go up to 1 year. और जो in country administrative review है they're easily taking 6 to 7 months. So you just have to be patient. जहाँ आपको लगता है the administrative review has taken a very long time, I would request you कि आप अपने MP से राब्ता करें. Contact your MP and explain everything to your MP कि how long it's taken for your administrative review decision, and then the MP could get in touch with the Home Office and the Home Office will reply to the MP. Somebody said कि sir, I have indefinite and my son was born in the UK. And if you had indefinite leave to remain and at the time of your son's birth उसके पास indefinite नहीं था, you can register your son as a British citizen if the son was born, your child was born in the UK. Asya ne kaha, can you please speak English? Asya, I do speak English. It's just that I have been following the channel was originally, I've been doing it for 8, 9 years, 10 years now. So the channel was originally, when I started off on social media, on various channels on Sky, and the median was Urdu, Punjabi, and I kind of carried on that median into when I finally decided to start our own channel a couple of years back. That is why if you look at my very old videos, they all come from either Venus TV or a couple of other TV channels I used to do my show on, and those were all Urdu median channels. So I kind of carried that forward, and if you want, my intention is in the future when I do especially my litigation shows, that would be in English, and then if you want, I could then randomly do one video where I will only speak English for you. But at this time, when I'm doing my regular videos, my intention is to mix English with Urdu, predominantly Urdu. Sorry, I missed a couple of messages. अगर आप दोबारा लिख लें. किसी ने लिखा है spouse visa if I live abroad 6 months, any issues? देखिए वो depend करता है, because as you know continuous residence की definition में थोड़ी changes आ गई. Now it's 180 days in a rolling period, जबकि पहले was slightly calculation was done slightly differently. So
Yes, it will have an impact, because if you come back within 180 days, then you have to be very careful when you go back again, because remember, 180 days now is on a rolling period basis. So if you are thinking of leaving the United Kingdom, be very careful that if you're going for around 180 days, you are able to come back, और उसकी वजह से आपके continuous residence break नहीं होगी when you go back again. Tricky ne bola, do you apply for sponsorship license? Yes, we do. I've made a video what documentary requirement is there for sponsorship license. तो please आप पहले वो documentary वाली जो मेरी evidence वाली video आप उसको देखें, then get in touch with me and then we can discuss कि क्या charges हैं to make an application. It all depends on the complexity of the case, कि previously आपने application डाली हुई है या नहीं, what is the size of your business and how much work is involved. So please have a look at the video I've made for sponsorship license and then get in touch with me, and then I could perhaps tell you how much the charge is. Can I switch to dependent visa before completing my degree? देखें, वो तो depend करता है कि कौन सा dependent visa पे आप switch कर रहे हो. तो if your partner is on a skilled worker visa, dependents are allowed on a visa, then of course from a student you can switch to a skilled worker dependent. So that is something you need to see कि जो आप dependent visa पे switch करने लगे हो, eligibility requirement you're meeting. So as long as eligibility requirement you're meeting, you can switch. That's not a problem. Somebody said, Tariq bhai, I've applied for fee waiver, then applied for FLRFP. Can I now apply for graduate visa? देखें, वो सारा depend करता है कि what was the outcome of your application, because ज़ाहिरी बात है, I've done a video on this, so please आपको time मिले आप उसको देखें कि in essence के when you make any application in time, तो ज़ाहिरी बात है 3C शुरू हो जाता है, and as long as the Home Office has not made a decision on that application, आप अगर उसको वेरी करते हैं, then of course the clock goes back. It's only that after the decision it gets a little tricky. तो एक बात का ख्याल रखें कि when you're applying the graduate visa, condition ये है कि you are switching from the student route, यानी कि आप student visa पे हैं, you completed your degree successfully, आपके जो university है, they've informed the Home Office कि you completed your degree successfully, and they have given you an email to that effect, because that's very important. So there's a lot of other factors on eligibility you have to check before you could say, okay, fine, you can, if you have a pending application, you can vary that application into a graduate visa. So there are a lot of questions that have to be asked. So it's very difficult for me to turn around and say, yes, you can apply for a graduate visa if you had a pending FLRFP application. There are little more questions that have to be asked. So कुछ मुझे आपसे सवाल पूछने पड़ेंगे, and only then we can ascertain the eligibility requirement is met. How long can I spend in Pakistan? I'm on a spouse visa. My husband is British citizen. Thinking you have to look into the appendix continuous residence, because obviously you have to be careful. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान जाते हैं, your intention is कि I want to keep my spouse visa, and then eventually after 5 years मेरे पास indefinite है, then you must have your continuous residence period. तो आप बस उसका ख्याल रखें. Asylum refused, no right of appeal. Do you have any other option? देखिए, पहली तो बात है, if your asylum is refused and there is no right of appeal, that means that the Home Office has certified your claim. So the first thing you have to look into is that why there was no appeal given to you, why the Home Office certified your claim, and then there is a challenge to that. And then you can challenge it, and if you're successful in the challenge, you will be granted a right of appeal. Now, of course, this is all a merit-based application. अगर आप मेरे वीडियोस asylum के बारे में वैसे भी देखते हैं जो मैं रैंडमली बात करता हूँ, asylum is very merit based. तो पहले तो हमने ये देखना है कि आपकी जो सर्टिफिकेशन हुई है क्लेम के, the Home Office did not give you a right of appeal. Can you challenge it, first of all? And then once you challenge it, you get the right of appeal, then we also have to look at the merit of the application. So देखें, if you have claimed asylum, it has to be meritable application. That is very important. और जहाँ तक बात आती है कि okay, what other application can I make? देखें, if you cannot go into
normal routes जो कि हैं इस मुल्क में, then of course the private life application is one of the applications everybody makes. लेकिन please, when we talk about private life application, you must meet the immigration rule requirement. तो मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि what is the definition of very significant obstacle. So when you get a chance, please आप उसको भी देख लें. But make sure करें कि it's a merit-based application. One thing मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, the immigration rules are there. You must seek advice in accordance with the immigration rules. बस उस बात का ख्याल रखिए. And the immigration rules are there. The guidance is there. The case law is there. So when you go to a competent person, they can sit with you and they can tell you कि आपके case का क्या merit है. And please only make meritable applications. That's very important. Sorry, the messages are going too fast, so I can't read them. Did you say, can you work full time? देखें, depend करता है what visa do you have, because student rights are different when you have a student visa for your work rights, and when you have graduate visa, your work rights are different. So it all depends on what kind of work rights do you have. But if you go, say, part-time study, but you're still on a graduate visa, then you're technically not on a student visa. And if you're on a graduate visa, and even although you're studying part-time, आप पे जो working rights हैं वो लगेंगे graduate visa वाले, so you're allowed to work within the limit of the applied for skill visa while on 3C leave, result is pending, waiting since 1 month. How long? Skill worker visa में आजकल time लग रहा है home office का, especially उस type की applications where you have 3C and then you're wearing, because the home office, it seems like, is doing extra checks on those applications. तो आजकल उनमें 2 months, 2.5 months तो लग रहे हैं. I hope it would be quick for you. If you have any other question, you can. Sorry, Risaf Singh, I don't know what you mean by should I do 10-year private life, because I need to know the basis of your case. So if any question, you can ask me, but it's very difficult to find out what you're saying about the private life. You said कि indefinite and the kid was born outside of the UK, then आप उसकी normal registration में थोड़ा issue होगा. Then you have to apply discretionary registration, or you have to make sure कि जब parents में से किसी को indefinite मिलता है, they can add the child into their application. So उस बच्चे को who was born abroad, have come here, and the kid and the parents have got the indefinite now, of course parents के पास एक option है कि discretionary basis पे when they apply for their naturalization, they can add the child as part of their application for registration on discretionary basis. लेकिन बस इस बात का ख्याल रखें कि it would be on discretionary basis, and there is a possibility the Home Office may say no. But if the child is born abroad and the parents then get indefinite and they've been living here for a while and now they apply for naturalization, they can add their children onto their naturalization application, but it would be on discretionary basis. All right, मेरा जो intention थी कि I'm going to do 25-30 minutes with you, वो मेरा time पूरा हो गया. Thank you so much for your love and support you give to our channel on the social media. उसके अलावा I'm going to do my best कि जब भी मुझे time मिला, I'll come online and speak to you. जाने से पहले, thank you so much for your love and support on social media. Keep an eye out the videos I make on immigration rules. I think very soon I'm going to start making videos on case law, so you have a better understanding of the application of the rules, जहाँ भी मुझे लगता है. But if you have a very specific topic you want me to discuss with you and explain the rules to you, get in touch with me and then I can make a video for that. Thank you so much. आप अपना ख्याल रखें. Thank you for your love and support. Look after yourself, and then please subscribe to the channel so you know next time when I'm coming live you can get on board. We also have a channel on YouTube. You can get subscribe to that as well, because I do balance between doing random live videos on YouTube or on TikTok. Apna khayal rakhein. Thank you so much. Allah Hafiz.